आप सभी का स्वागत है आपके घर में। हम सभी भगवत गीता से पाठ करेंगे। Who has heard of Bhagavatam? किस किसने भगवत गीता के बारे में सुना है? अपने अपने हाथ ऊपर कर। किस किसने भगवत गीता के बारे में नहीं सुना है अभी तक, वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। सच। तो शायद आपको पता हो या नहीं भी पता हो, गीता का मतलब है गान। भगवत का मतलब है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये गीता भगवान के द्वारा बोली गई है। एक बहुत ही अचंभित करने वाली परिस्थितियों के बीच में, जो कि युद्ध क्षेत्र में बोली गई थी। There was approximately 25 soldiers ready to kill each other. तो वहां पर लगभग 25 मिलियन सोल्जर्स यानी कि 2.5 करोड़ सैनिक वहां पे थे जो एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे। God took that opportunity to speak his devotee into all of us in that situation. उस परिस्थिति में भगवान ने इस मौके का फायदा उठाया अपने भक्त अर्जुन को ये चीज का उपदेश देने के लिए और हम सभी को इस उपदेश को देने के लिए। There are so many parallels and so many significance of that one action. That in itself. वहां पे इस भाष्य के अंदर इतने सारे गुह्य तत्व मौजूद है कि हर एक एक तत्व पे एक लेक्चर दिया जा सकता है। I'm going to read chapter 9, text 29. आज हम अध्याय श्लोक 29 से पाठ करेंगे और इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। Very interesting. There was one general of the France military, very high. एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, फ्रांस का एक जर्नल था जो बहुत ही हाई रैंक पे था, अच्छी ऊंची स्थिति पे था, और वो एक बार प्रभुपाद से मिलने आए थे। वो प्रभुपाद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, इतना ज्यादा प्रभावित था कि उन्होंने आते से ही प्रभुपाद को एक बहुत ही बड़ी धनराशि दान करी और श्रील प्रभुपाद ने बदले में उन्हें भगवत गीता दी। उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत ही व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे नहीं लगता शायद मुझे समय मिलेगा इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या आप कोई एक अध्याय मुझे बता सकते हैं इन सब में से जो मैं पढ़ूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। प्रभुपाद ने कहा अध्याय 9 को आप पढ़िए। उसका अर्थ है परम गुह्य ज्ञान।
इसके बाद वो जो जनरल थे वो हमको बताया कि बड़े मैं अभी संस्कृत का भाष्य पढ़ा हूँ। You can do it. Yeah, I can translate कर लेंगे। You can do the ending. समः संभाव अहम मैं सर्वभूतेषु समस्त जीवों में न No. कोई नहीं मैं Nay. मुझको Let's go. द्वेष्यः Vaishya. द्वेषपूर्ण अस्ति Asti. है न Na. न तो Nato. प्रियः Ya. प्रिय ये Yay. जो भजन्ति Vajanti. दिव्य सेवा करते हैं तू Tu. लेकिन Niki. माम Mam. मुझको भक्त्या Bhaktya. भक्ति से मई Mai. मुझ में है ते वे व्यक्ति तेषु उनमें च भी अपि निश्चय ही अहम मैं I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. अनुवाद मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं मैं सबों के लिए संभाव हूं किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं So we'll break the purport up in two parts. I'll read half and then read that half and then the second half. Sure. Purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. One may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is his special friend, then why does he take a special interest in the devotees who are always engaged in his transcendental service? But this is not discrimination. It is natural. Any man in this material world may be very charitably disposed, yet he has a special interest in his own children. The Lord claims that every living entity, in whatever form, is his son. And so he provides everyone with a general supply of the necessities of life. He is just like a cloud which pours rain all over, regardless of whether it falls on rock or land or water. But for his devotees, he gives a specific attention. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness, and therefore they are always transcendentally situated in Krishna. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in him. The Lord says here distinctly, Mayite, they are in me. Naturally, as a result, the Lord is also in them. तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं
किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। This is reciprocal. This also explains the words yayatamam prapajante tam statayava bhajamiyam. Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotee are conscious. When a diamond is set in a gold ring, it looks very nice. The gold is glorified, and at the same time, the diamond is glorified. The Lord and the living entity eternally glitter. And when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he is like gold. No, let me continue. The Lord is a diamond, and so this combination is very nice. Living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, and there is no personalist philosophy, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation between the Supreme and the living entity. But in the personalist philosophy, there is. The example is often given that the Lord is like a desire tree. And whatever one wants from this desire tree, the Lord supplies. But here the explanation is more complete. The Lord is here stated to be partial to the devotees. This is the manifestation of the Lord's special mercy to the devotees. The Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. It belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो आध्यात्म जगत का अंश है जहां शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है।
I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। So in this material world, it is explained that there is threefold miseries: adhyatmic, adhibhautic, and adhidaivik. तो इस भौतिक जगत में यह समझाया जाता है, बताया जाता है कि तीन तरह की त्रासदियां, आपदाएं रहती है, जिनको त्रयताप बोलते हैं। उसमें से है आधि देविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। Who in this life, at one point in time, who has suffered in any way, shape, or form? If you have suffered in this life, raise your hand. तो आप में से जिसने भी कुछ न कुछ दुख भोगा है, चाहे वो किसी भी रूप में भोगा हो, किसी भी कारण से भोगा हो, अगर भोगा है तो अपना अपना हाथ खड़े करें। Raise your hand. Okay, that's pretty much everyone. Okay, it'd be easier. Who has not suffered? आप में से वो लोग हाथ खड़े कर सकते हैं जिन्होंने कभी दुख नहीं भोगा है। Raise your hand. You have never suffered. You've never had hot weather. क्या आपको You've कभी never गर्मी got नहीं? sick? क्या You आप never got sick? That's called suffering. No, okay. Adhyatmic means pain of the mind. Your mind has never been agitated. Okay. You've never been agitated in your whole life. Okay. Well, I don't know what you're doing here. Because Krishna says, from the highest planet in this material world down to the lowest, all are places of misery, and where repeated birth and death take place. भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे उच्च लोक से लेकर सबसे निम्नतर लोक में भी सारे के सारे जीवात्मा जो है वो किसी न किसी भौतिक आपदा, त्रासदी और दुख से भोग रहे हैं। But one who attains my abode never takes birth again. और भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में वापस आ जाता है उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। So, Srila Prabhupada says adhyatmic. You suffer in your body, you get sick, someone hits you with a car, someone hits you over the head with a bat. That is suffering of the body and mind. श्रील प्रभुपाद आधि आत्मिक की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि ये वो उस तरीके के दुख हैं जो आपको आपके शरीर और आपके मन के द्वारा मिलती है। हो सकता है आपका मन आपको दुखी कर रहा हो, या कोई आपको मार दे, या कोई आपको अपनी गाड़ी से हिट कर दे। इस तरीके के दुख आधि आत्मिक कहलाते हैं। Then there's adhidaivik. There is severe storms, there's typhoons, hurricanes, tornadoes, excessive heat, excessive cold. इसके बाद आदि दैविक आता है। आदि दैविक का अर्थ होता है कि वो आपदाएं जो हमको नेचर यानी प्रकृति की तरफ से मिलती है, जैसे कि हरिकेन, साइक्लोन्स यानी बवंडर, तूफान, समुद्री बवंडर, इस टाइप के। I lived in a beautiful country setting once with 50 acres of land. मैं एक बहुत ही सुंदर देश में रहता था जहाँ पे लगभग 58 एकड़ की जमीन पे हमारा घर था। So happy out in nature. और बहुत ही सुंदर वहाँ पे जो प्राकृतिक दृश्य था वो। And then one day a hurricane came and knocked over 75 huge trees that I had. और उसके बाद एक हरिकेन यानी कि एक बवंडर सा आता है और वो लगभग 75 के करीब बड़े बड़े पेड़ जो मेरे घर के आसपास लगे थे उनको उखाड़ लेता है। And blocked all the roads from coming in and coming out. No electricity, no nothing. और उसी आपदा के कारण सारे के सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। वहां पर कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। बिजली की व्यवस्था भी ठप पड़ जाती है। For 2 weeks I couldn't get out. लगभग 2 हफ्ते के लिए, पूरे 2 हफ्ते के लिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। This has never happened to any of you? क्या ऐसा कुछ आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है? Not to her. She's exempt. You must be from Vaikuntha. Because everyone, Prabhupada says, everyone, if you're honest, has suffered. Did you not have a grandparent that died? No.
hold on, Mataji. Have you ever had someone dear to you die? Did you? You never had someone die in your family? And you didn't suffer from that? Okay, all right. So I think we can agree we've all suffered. कुछ द्वंद्व रहेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं. Until you accept that this is your condition, you will never take shelter of Krishna. Why should you? जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी स्थिति इतनी दयनीय है, तब तक आप भगवान की शरण को स्वीकार कैसे कर पाएंगे? It is actually called the trident of Durga. She stabs the living entities in the Mahatattva with Adhyatmic, Adhibautic, Adhidaivik. ये बिल्कुल माता दुर्गा के त्रिशूल के समान है, जो कि महत तत्व के अंदर डाला जाता है, जिसके माध्यम से 3 टाइप की आपदी त्रासदियां आपको दी जाती है: आदि देविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक. Even beings, demigods who live for millions of years still have to be plagued with Adhyatmic, Adhibautic and Adhidaivik. यहाँ तक कि जो देवता हैं बड़े बड़े, जो लाखों करोड़ों सालों तक जिनकी आयु रहती है, उन्हें भी इन 3 त्रय तापों का सामना करना पड़ता है: आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. Birth is not a pleasant thing. I have 3 sons. I saw them born. It was horrific. तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसमें से जो जन्म है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है. मैंने स्वयं की 3 संतानों को जन्म लेते हुए देखा है, और मुझ पे विश्वास करिए, बहुत ही भयावह होता है वो. And what happens as soon as you're a young child? Vyadi. Then the children start getting sick. That's also painful. I may not be sick, but my children are sick. Isn't that painful for you to see your children sick? तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो बच्चा है, जो आपकी संतान है, हो सकता है उसको कोई बीमारी लगे, उसको हम व्याधि कहते हैं. हो सकता है आपको वो बीमारी ना हो, लेकिन आपकी संतान को अगर वो बीमारी है तो आपको दुख होगा. इसी को हम व्याधि कहते हैं. And then a very mysterious thing creeps up on you in life. और उसके बाद एक बहुत ही अविस्मरणीय, अचंभित करने वाली चीज आपके सामने आती है. You're not even noticing it's going to happen. आप इस चीज को महसूस भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे कि ये आपके साथ हो रहा है. And you get jara, old age. Jara. जब आपको जरा मिलेगा, यानी कि बुढ़ापा. I was 19 years old when I first walked in the Hare Krishna temple. I was 19. 19 वर्ष की आयु का था जब मैं पहली बार हरे कृष्णा मंदिर में प्रवेश करा था. How old are you, young man? अब 19. Oh, okay, stand up. Stand up. I walked in, I was just like this young man right here. He's 19 years old. मैं लगभग ये सफेद कुर्ते में खड़े हुए प्रभु जी की तरह ही था. उस समय मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष की थी. He's more handsome than me though. मुझसे जरूर बहुत ज्यादा सुंदर है. That was 51 years ago. I'm 70 years old. ये लगभग 51 साल पुरानी बात है. आज मैं लगभग 70 साल की आयु का हूं. How it happened? Jara, old age. And believe me, Mataji, it's miserable. It's not nice. Who will testify that old age is not a nice thing? आप में से कौन-कौन ये चीज को? I want to hear it from the old people. Raise your hand if you're old and you think old age is not good. आप में से कौन-कौन इस चीज को प्रमाणित करना चाहेगा कि बुढ़ापा जो होता है बहुत ही कष्टमय स्थिति होती है? तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. Okay, there's an honest woman right there. वहां पे एक माता जी है जो सत्य बोल रही है. This isn't my idea. This is Krishna's idea. ये मेरा विचार नहीं है, ये कृष्ण के द्वारा स्थापित सिद्धांत है. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. And then what waits for all of us? Every single person, including that little boy right there, is waiting for Mrityu. This is reality. तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. तो मृत्यु जो हम सभी का इंतजार कर रही है, हम सभी को एक न एक दिन मिलेगी. चाहे वो ये छोटा सा बालक हो या कोई भी हो, हर किसी को मृत्यु प्राप्त होगी. These are the problems of life. ये सबसे मुख्य समस्या है जीवन की. And it is not how would you say, you don't have to be embarrassed or ashamed that you don't like these things. Who likes old age? Who likes disease? And who likes death? तो ये कोई बहुत
एम्बेरस यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरा मानने वाली बात नहीं है इसको स्वीकार करने में कि आपको अच्छा नहीं लगता इन दुखों को भोगना, चाहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो, कोई भी होगा उसको जन्म लेना, मृत्यु जरा व्याधि ये पसंद नहीं आएगा. So Krishna says, Samaham sarva bhuteshu. कृष्ण कहते हैं समोहम Name सर्वभूतेषु dveshasti na priya. न मे That, hold द्वेषोऽस्ति न प्रिय. I am envious of no one. I am envious of no one. Krishna is not jealous. We all feel a little bit of jealousy in the course of our lives. I've tried to subdue mine because there's no point in it, right? Someone is more intelligent, someone is more beautiful, someone is stronger, someone is richer, right? Krishna doesn't have any jealousy. He doesn't envy anyone. भगवान कृष्ण बताते हैं उनको उनके मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं है. उल्टा अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे तो हमारे अंदर जरूर ईर्ष्या और द्वेष के भाव हैं अलग अलग जीवात्माओं के प्रति. क्यों? हो सकता है कोई हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, कोई हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, कोई हमसे ज्यादा रिच हो यानी पैसे वाला हो. And why is that? Because Krishna is the strongest. Krishna is the richest. And Krishna is the best looking. Why should he be envious of anyone else when he has everything unlimitedly? He's not envious. कृष्ण किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो सबसे ज्यादा सुंदर हैं, वो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान हैं, वो हर चीज में हर ऐश्वर्य में सबसे ज्यादा हैं. तो वो किसी से ईर्ष्या क्यों करेंगे? So, if you could meet such a person, wouldn't you want to do that? अगर आप इसी तरीके का एक इंसान बन पाए तो क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहेंगे? You can meet such a person. You will meet such a person if you chant the holy name of Krishna. आप भी इसी तरीके का व्यक्तित्व बन सकते हैं यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि भगवान के पवित्र नाम का जप करें. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Look, he's looking right at you. देख सकते हैं हम ऊपर भगवान श्री कृष्ण आप सभी को देख रहे हैं. And one day you will see this whole thing move and they'll be dancing Ras Leela. एक दिन आपको भी ये पूरा रासलीला का दृश्य देखने को मिलेगा आपकी आंखों के समक्ष. Prabhupada one time said, some man asked, it was a reporter, asked one of our devotees, what is prasadam? You say you offer this food to Krishna and it becomes prasadam. What does that mean exactly? And the devotee was explaining, well, our consciousness is we're giving it to God, and theoretically God comes and takes it. And Prabhupada was sitting right there, and he said, no, I am not a fool like you. I see Krishna eating the prasadam. तो एक बार प्रभुपाद के भक्तों के समक्ष एक रिपोर्टर यानी कि एक रिपोर्टर आया था. वो उनसे पूछ रहा था कि मुझे ये प्रसादम का जो सिद्धांत है, जो परिभाषा है, समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग खाना भोजन बनाते हैं फिर भगवान को अर्पित करते हैं और उसके बाद आप उस प्रसाद को लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता. तो वहां पे जो भक्त थे वो उनको उत्तर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन बना के भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, उसके बाद पारिभाषिक रूप से भगवान कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर हम ये मान के उसको खा लेते हैं. तो प्रभुपाद साफ मना करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ बैठा कोई मूर्ख नहीं हूं, इस प्रसाद में भी मुझे कृष्ण दिखते हैं. As you surrender unto Krishna, Krishna will reciprocate with you. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. जिस परिमाण से आप भगवान के प्रति शरणागत होंगे उसी परिमाण में भगवान आपके प्रति रेसिप्रोकेशन यानी कि आपके साथ व्यवहार करेंगे, आदान प्रदान करेंगे. The first thing you have to understand is that you are not in a natural place. You are not in this material world. This is not a natural place for any living entity.
सबसे पहली चीज जो आपको समझना होगी कि आप इस भौतिक जगत में जब मौजूद हैं तो ये कोई स्वाभाविक जगह नहीं है आपके रहने के लिए, ये कोई बहुत ही अच्छी जगह नहीं है आपके लिए। Because the soul, mamaivam so jiva loke, jiva bhuta sanatana, manasastra nindriyani prakriti stani karshate. The living entities are eternally Krishna's parts and parcel. Krishna is Satchitananda Vigraha. We are also Satchitananda Vigraha. We are never meant to grow old. We're never meant to get disease, and we're never meant to die. Those things are artificial and unnatural for the soul. तो हमें समझना होगा कि जीव क्या है, हम जीव क्या है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जो जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत नित्य अंश है, और क्योंकि हम भगवान के नित्य अंश हैं और भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह, तो हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद हुआ। तो फिर अगर स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस टाइप की समस्या भोगना हमारा स्वभाव नहीं है। हमें मरने की आवश्यकता नहीं है, हमें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है। In the course of this conversation, just like all of you are looking at me, I am also looking at all of you. तो इसी भाष्य को आगे बढ़ाते हुए अगर देखें, जिस तरीके से आप सभी मुझे देख रहे हैं उसी तरीके से मैं भी आप सभी को देख रहा हूं। And I can see some of you are really getting this, and I've seen some of these teenage girls walk out like, why am I here anyways? तो मैं देख सकता हूं कि आप में से कुछ लोग तो इसको ध्यान से समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ यहां पर बैठी हुई शायद माताएं हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए वो बाहर भी जा रही हैं। It is an amazing thing how every living entity is perfectly placed in the position they're in due to your past pious and sinful activities. एक बहुत ही अचंभित करने वाली और आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पर मौजूद हर एक एक व्यक्ति, इस संसार में मौजूद हर एक एक जीवात्मा एक पूर्ण तरीके के शरीर में उनको भेजा गया है, जिससे वो अपने पुराने जन्मों में करे गए कर्म, जो पाप या पुण्य हो, उसको भोगने के फलस्वरूप उनको ये शरीर प्राप्त हुआ है जिसमें वो ये भोग रहे हैं। Who here met Bhakti Charu Swami? Raise your hand. यहाँ पर कौन कौन ऐसा मौजूद है जो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज से मिला है? Raise your hand if you were fortunate enough to come. अपना हाथ उठाइए अगर आप इतने सौभाग्यशाली थे। Okay. So I met him 45 years ago, more than that, whenever 1977 is. तो मैं उनसे मिला था, लगभग 45 वर्षों से भी ज्यादा समय हो गया है जब मैं उनसे मिला था, 1977 के करीब। And I also met Srila Prabhupada I became his disciple in 1973. और मैं श्रीला प्रभुपाद से मिला हूं और मैं उनका शिष्य बना था 1973 में। These are beings that are so far removed from this worldly plane. ये वो व्यक्तित्व हैं जो बहुत ज्यादा दूर स्थित हैं इस भौतिक जगत से और इन भौतिक जगत की प्रक्रियाओं से। But here's the thing. Each and every one of you have the same right to what they have. You have the same claim to what they have. You have the same opportunity to take advantage of this process of self-realization and never come back to this wicked world of birth and death. तो यहाँ पर मौजूद हम सभी लोगों के पास पर्याप्त रूप से मौका है और ये हमारा हक भी है कि हम श्रीला प्रभुपाद हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के समान व्यक्तित्व धारण कर सकते हैं, यदि हम इस मौके का फायदा उठाएं जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे अग्रसर हो सकें। You are spirit souls, they are spirit souls. आप भी आत्मा हैं और वो भी आत्मा है। The difference is they understood as a part of Krishna, our whole purpose is simply to satisfy Krishna. फर्क सिर्फ इतना है कि वो समझ चुके हैं कि वो भगवान के अंश हैं और उसी के फलस्वरूप उनको भगवान की सेवा करना है। And here in this verse, Krishna is revealing
a universal truth, a universal secret. और इसी श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण हम सभी को बता रहे हैं एक ऐसा परम सत्य, एक ऐसा परम गुह्य ज्ञान. He says he's not partial to anyone. He's not partial. भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं. But if you render service unto him and become his devotee, become his friend, you will be able to be with him for eternity. लेकिन भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, लेकिन यदि हम सभी भक्ति पूर्वक भगवान की यदि सेवा करेंगे और उनके मित्र बनेंगे, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं. You will have this opportunity just as Srila Prabhupada had the opportunity, Bhakti Charu, Swami had the opportunity, the brahmacharis and grihastas that live in this complex, they have the opportunity. They seek that opportunity to surrender to Krishna. They seize the moment. You have to seize the moment. This is your opportunity to get the greatest thing you can possibly imagine. तो आप सभी के पास भी श्रीला प्रभुपाद जैसा ही एक मौका है, जैसा कि श्रीला प्रभुपाद के पास था, जैसा श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के पास था, जैसा यहाँ पर मंदिर में रह रहे ब्रह्मचारी और गृहस्थों के पास है, वही मौका आपके पास भी है. बस फर्क इतना है कि आपको उसका फायदा उठाना है. And it's so simple. Repeat after me. Hare Krishna. Hare Krishna. Louder. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Srila Prabhupada ki. Jai. I think everyone get that. Is there any questions? Is this Yeah, we can take question answers. what's We can take question answers. Huh? We can take question answers. Okay, question. Is there any questions? So आप सभी में से किसी को भी कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल क्लास. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि इनिशियल प्रोसेस क्या है हमारी फैमिली मेम्बर्स को इस्कॉन से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो मेरे खिलाफ नहीं यहाँ पर आने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि वो भी इसको ज्वाइन करें. मैं उन्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता. Hare Krishna Prabhu, he is asking that what is the basic initial process to get his family members join this particular movement, although they are not in against of him, but he wants them to become more happy by joining this movement. You're called Kripa Sindhu, ocean of mercy. Kripa Sindhu. आपको कृपा सिंधु मिला है, यानी कि पूरा समुद्र मिला है कृपा का. That's a natural attribute of any Vaishnava. और ये किसी भी वैष्णव की स्वाभाविक गुण होता है. Srila Prabhupada used to say self-realization does not mean selfish realization. प्रभुपाद कहते थे आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी ही इच्छाओं के बारे में सोचें. It means selfless. उसका मतलब होता है खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना. So you're thinking you have this good opportunity. You should seize the moment. You should seize the moment. आप सोच रहे हैं कि आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए. When I first read Prabhupada's books, I started reading them in 1972. मैंने जब पहली बार श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ना चालू करे, लगभग 1972 में मैंने पहली बार इसे पढ़ना शुरू करा था. And I moved into the temple in early 73. और मैं लगभग 1973 के शुरुआत में ही मंदिर में ज्वाइन कर लिया था. And I was adamant that I had to be initiated as soon as possible. और उस समय मैंने ये जिद पकड़ ली थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दीक्षा प्राप्त करनी है. I made
the temple president's life hell. मैंने वहां पे मंदिर अध्यक्ष जो थे उनके जीवन को बहुत ही ज्यादा कष्टों से भर दिया था. He said, all right, you can get initiated after 6 months. आखिरकार फिर वो मान गए, बोले ठीक है तुम दीक्षा ले लो लगभग 6 महीनों के अंदर अंदर. They won't do that anymore, इसके बाद वो कभी इस टाइप का कार्य नहीं करेंगे. but I have to say it was one of the best things I ever did in my life. बट मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने मेरे जीवन में सबसे बेहतर कुछ करा था तो वो यही था. And 1 year later, I took second initiation directly from Srila Prabhupada. और लगभग 1 वर्ष पश्चात मैंने दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा श्रील प्रभुपाद जी से ली. So I seized the moment. मैंने उस मौके का फायदा उठाया. You have to seize the moment for yourself. आपको भी अपने लिए इस मौके का फायदा उठाना है. And humbly you can implore your family, please take this because I love you. तो पहले आपको अपने आप को उस मौके का फायदा उठा के आगे बढ़ाना है और फिर बहुत ही विनम्रता के साथ आपको यही प्रस्ताव अपने परिवार के सामने रखना है ताकि वो इसको स्वीकार करें. But the truth is, this is all your family here. लेकिन सत्य तो यह है कि यहाँ मौजूद हर एक एक व्यक्ति आप ही का परिवार है. Krishna says, Aham bija pradapita, I am the seed-giving father. And therefore, every living being, including the birds and the cows and the chickens, are actually your brothers and sisters. भगवान कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, यानी कि मैं यहाँ पर मौजूद और हर जगह मौजूद सारे ही जीवात्माओं का पिता हूँ. तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पर मौजूद हर एक एक व्यक्ति, चाहे वो इंसान हो या बाहर कोई आपको गाय बछड़ा या चिड़िया कुछ भी मिले, वो सब आप ही के परिवार का हिस्सा है. See, this is the one thing that's very frustrating in preaching. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा आकर्षण करती है प्रचार करते समय. Everyone has free will. हर किसी के पास अपनी आजादी है कार्य करने के लिए. You can use it to elevate yourself, or you can use it to degrade yourself. तो उस मौके का, उस आजादी का आप फायदा उठा सकते हैं, या तो अपने आप को आगे बढ़ाने में या फिर अपना पतन कराने में. The choice is yours. जो चुनाव है वो आपका है. Questions? और कोई प्रश्न? Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam ko. I had a question, just like you told that you have been initiated by the most wonderful people on the planet. From your experiences, were there any instances in your life when after being initiated, you were deviated or you had thoughts of like it's difficult to follow the same path, or if something where you felt that whatever that you're doing right now, which is Krishna consciousness, you should do something else, something other than that. And if you did have such thoughts, how did you overcome that? Okay, very good question. Very good. Translate that. हरे कृष्णा. प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त करी है, श्रील प्रभुपाद जी से, तो क्या दीक्षा प्राप्त करने के बाद कभी आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि ये आंदोलन में आगे बढ़ना, टिके रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इन सिद्धांतों का पालन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, शायद मैं कहीं और जा सकता हूं? और अगर ऐसा कोई समय आपके जीवन में आया तो आप उस समय से बाहर कैसे निकले? So, the beginning of the class, I mentioned how Krishna was speaking before millions of warriors, Maharajas, ready to kill each other. मैंने कक्षा के प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि कहाँ पे कृष्ण खड़े थे. कृष्ण युद्ध क्षेत्र में खड़े थे जहां पर लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को मारने के लिए, महारथी लोग अपने आप को एक दूसरे को मारने के लिए उपस्थित थे. And Arjuna was looking at his relatives, at his guru, his martial guru, at his grandfather, knowing I have to kill them.
और अर्जुन वहां पर उपस्थित उनके सभी परिवारगण, रिश्तेदार और अपने सैन्य गुरु को देख रहे थे और वो देख रहे थे कि उन्हें किस किस से युद्ध यहाँ पर करना पड़ेगा. You don't think that Arjuna was in anxiety? क्या आपको लगता है कि अर्जुन उस समय मुसीबत में और समस्या में नहीं था? So, the significance of the battle of Kurukshetra is that we all are on the battle of Kurukshetra. तो जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध से देखने वाली कि वहां पर सभी लोग युद्ध क्षेत्र में थे और हम लोग भी अपने अपने जीवन में युद्ध क्षेत्र में ही हैं. And there's very dark elements that are constantly trying to keep you from full enlightenment, full Krishna consciousness. और सबसे जो अंधकारमयी बात यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपको अभी भी कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं. So I had a scholarship to an Ivy League school called Brown University, and I left that scholarship to become Prabhupada's servant. मुझे एक बहुत ही उच्च विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप मिली थी एडमिशन के लिए और मैंने उस स्कॉलरशिप का त्याग कर दिया और प्रभुपाद को ज्वाइन कर लिया. It was the greatest decision of my life. मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था ये. Hare Krishna. Prabhupada made my good fortune. I had no idea. I still don't have full idea. But every day of my life, I get more realizations. And I'm like humbled that somehow or other I made that right choice. मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था लेकिन श्रील प्रभुपाद ने मेरी जो कहते हैं सौभाग्य को जगा दिया. मुझे आज भी इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है लेकिन धीरे धीरे मुझे साक्षात्कार होते जा रहा है और इसी तरीके से प्रभुपाद ने मेरे सौभाग्य को जगाया. So one thing is, it's very difficult to just by yourself practice Krishna consciousness. You really need to have the association of devotees. It's very, very important. तो अकेले अपने ही दम पर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसी को आसान बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप भक्तों के संग में रहकर भक्ति में आगे बढ़ें, वरना ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. Because sometimes you're feeling very strong. Oh, I can do this. This is no problem, right? क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ. And then sometime the mind is whipping you. और हो सकता है उसी के अगले पल आपका जो मन है वो आपको कोड़े लगा रहा है, बार बार मार रहा है. But you have your God brother there saying, Prabhu, I'll take care of your mind. बट आपके पास यहाँ पर आपके भक्तों का संग है, गुरु भाइयों का संग है जो आपकी उस समय मदद कर सकता है जब आपके मन आपको परेशान करेगा. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Any other? There was one person has a question right there. One more question. Prabhu, want to give that microphone? And then that'll be the end. You can get rid of it. Hare Krishna, Prabhuji. You just a while back you mentioned about free will, which is amazing. However, there is a time immemorial, very old debate about determinism versus free will. Determinism versus free will, and there are adherents on both sides of the debate. Having put your weight in favor of free will, how would you position yourself with respect to free will versus determinism? Thank you. Okay. Excellent question. Please translate that. प्रभु जी पूछना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पाया उसके अनुसार प्रभु जी पूछना चाह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि थोड़ा सा अंतर है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता के साथ करेंगे कार्य को, और दूसरा है आपके पास आज़ादी उस कार्य को करने की. तो उसी के बारे में जो डिफरेंस है, जो
जो उसमें डिफरेंस यानी कि जो अंतर है उसको जानना चाह रहे हैं, और क्यों आप फ्री विल यानी कि आजादी वाला जो भाग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। Both factors are there. There is determination or determinism that based on your free will to choose, the future will be determined for you based on your free will to choose. तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास ये आजादी है कि आप निर्णय ले सकते हैं आपको क्या करना है, और आपका निर्णय ये डिसाइड करेगा कि आप आगे किस चीज के प्रति डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ होना चाहते हैं, किस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। So one chooses, just like we could choose to bow down before Krishna, or we could choose to stand up proudly and not bow down. तो हमारे पास चॉइस है कि हम कृष्ण बलराम में से हो सकता है बलराम को चुन सकते हैं, या फिर हम अपने ही घमंड में चूर होके खड़े रहे वहां पे कि हम क्यों चुने। If by some good fortune you choose to bow down, there is so much benefit. It's actually indescribable how much benefit there is in bowing down before Krishna. मान लीजिए अगर सौभाग्यवश आपने बलदाऊ को चूज करा तो उस केस में, इस सिनारियो में आपके पास असीम मात्रा में सुविधाएं होगी, असीम मात्रा में आपको लाभ मिलेगा, जिसको मैं शायद यहाँ पर परिमाण रूप में परिभाषित भी नहीं कर सकता। So the thing is, when one chooses to reject the instructions of Krishna and be independent or think you're independent, because actually there is no such thing as independence, because we are constantly dependent on so many factors. तो मान लीजिए यदि आप भगवान कृष्ण के निर्देशों को अलग रखकर भगवान के अनुगत्य के विपरीत जाकर अपने आप के ऊपर निर्भर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ समस्याएं झेलना पड़ सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे भगवान से विपरीत, भगवान के अनुगत्य से अलग होकर, आजाद होकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वाकई में आप आजाद यानी कि खुद के दम पर सारी चीजें नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कारण और कारक हैं जिन पर आपको निर्भर करना पड़ेगा। Every word, try to understand this concept. This is a very troubling concept. Every word we speak, every action we perform is actually being recorded in a grand universal cosmic record. Every word you speak, every action you perform. तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। कुछ भी आप एक शब्द भी बोल रहे हैं, छोटी सी प्रक्रिया भी अगर आप कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे अधीक्षक हैं जो उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उस चीज को अपने पास जमा करके रखते हैं। तो आपकी हर एक एक प्रक्रिया रिकॉर्ड हो रही है, जमा हो रही है। So this is Bhagavad Gita, and it's a big book, and there's a lot of information in this book. But if you want to know the conclusion of Bhagavad Gita, Sarvadhamma Parityajam Mamekam Saranam Braja Aham Tvam Sava Papepyo Mokshashisami Masuchya. That takes care of everything. That carries all determination. It takes care of your free will. You just surrender to Krishna. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भगवत गीता है ये बहुत ही बड़ी पुस्तक है, लेकिन अगर हम इसके उपसंहार की तरफ जाएं, इससे निर्णयात्मक क्या हो रहा है, तो वो आपको मिलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो श्लोक है ये आपको भगवत गीता का निर्णयात्मक डिसीजन दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है। तो वो इस तरीके से आपको मदद कर रहा है पूरा समझने में। And without going on with a 3-hour lecture on this subject matter, we'll leave it at that. And we can, if anyone wants to talk to me afterwards, you can talk to me. तो अभी हम इन्हीं बिंदुओं पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को विराम देंगे। अगर आपको इसके बाद भी किसी को इस पर चर्चा करनी है तो इस क्लास के बाद आप चर्चा कर सकते हैं अलग से। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो
तो अभी आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। मैं देख रहा था कुछ लोग प्रभु जी ने जो भी बताया उसको व्हाट्सएप में लिख रहे थे। तो व्हाट्सएप में जो भी आपने लिखा है उसी के आधार पर आप बताना है, और जो लोग नोट पेपर पेन में लिखे हैं वो लोग नोट से बताना है, और जो लोग मोबाइल से लिखे वो लोग मोबाइल से बताएंगे। तो मैं रिक्वेस्टिंग रोहित प्रभु, फर्स्ट क्वेश्चन